Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Cryptocurrencies moved in a wider range this week as fears of bank run from the US to Europe pushed investors to safe assets. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market value, swung between $22,500 to $26,000 level. Similar moves were witnessed by Ether, the second largest cryptocurrency. The markets have stabilized now to a certain extent, with global central banks from the Federal Reserve in the US and Swiss National Bank coming to the bank rescue. Bitcoin has reclaimed psychologically important level of $26,000 while Ether has its eyes set on $1,750. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ह्यू हेफनर के प्लेबॉय की पेरेंट कंपनी PLBY ग्रुप ने कहा कि उसने पिछले साल हेल्ड किए इथेरियम पर $4.9 मिलियन की हानि का नुकसान उठाया है, क्योंकि क्रिप्टो विंटर में ब्रॉडर मार्केट प्राइसेस में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। गुरुवार की एक एनुअल फाइलिंग के अनुसार लाइफस्टाइल और मीडिया कंपनी ने कहा कि उसने इथेरियम को 2021 में लॉन्च किए गए अपने राबिटर्स नॉन फंजिबल टोकन के पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया, जिसे उसने अपनी बैलेंस शीट में डिजिटल एसेट्स के रूप में होल्ड किया है। फाइलिंग में कहा गया है कि डिजिटल एसेट्स की वैल्यू पिछले साल की तुलना में $327,000 है। Moving on, the Federal Deposit Insurance Corporation denied it would require any purchaser of Signature Bank to divest its crypto activities. The FDIC responded to a Wednesday Reuters report that said any buyer of Signature must agree to give up all the crypto business at the bank, citing two unnamed sources. An FDIC spokesperson denied this to Reuters. An FDIC spokesperson said in an email that the receivership does not end until all the bank's assets are sold and all the claims against the bank are addressed and the acquirer decides the conditions of their bid. Reuters reported that an FDIC spokesperson told the news service that the agency would not require divestment of crypto activities as part of any sale. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लेंडिंग प्रोटोकॉल और स्टेबल कॉइन इशू मेगाडाओ ने 16 मार्च को यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बॉन्ड की अपनी पोर्टफोलियो होल्डिंग को 150% बढ़ाकर $500 मिलियन से $1.25 बिलियन करने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव का उद्देश्य रियल वर्ल्ड एसेट्स और हाई क्वालिटी बॉन्ड्स के लिए प्रोटोकॉल के जोखिम को बढ़ाना है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण 11 मार्च को इसकी डाई स्टेबल कॉइन ने अपना $1 पेग खो दिया था। मेगर के 77% प्रतिनिधियों द्वारा $750 मिलियन डेट सीलिंग हाइक अनुमोदित किया गया था। बॉन्ड्स इक्वल मैच्योरिटीज के साथ खरीदे जाएंगे और हफ्ते में 2 बार और 6 महीने की अवधि में हर $62.5 मिलियन के टोटल 12 स्लॉट होंगे। स्ट्रैटेजी के तहत मेगाडाओ ने कहा कि हिरासत के बाद 4.6% से 4.5% की नेट एनुअलाइज्ड यील्ड देने की उम्मीद है और प्रस्ताव में कहा गया है कि मेकर की रेवेन्यू स्ट्रीम को ट्रेडिंग कॉस्ट से भी बढ़ाया जा सकता है। Moving on, LinksDAO, a Web3 community formed with ambitions to purchase a real-world golf course, said Thursday that it has agreed to do just that. It claims to have secured the winning bid to purchase Spey Bay Golf Club, an oceanside 18-hole golf course in Scotland. While the deal terms have not been disclosed, the over 100-year-old Spey Bay course was listed with an expectation of receiving bids over 750,000 GBP or nearly $910,000. Golf Digest reports that the deal may close higher than the list price. The deal is expected to be finalized in the coming weeks. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निष्क्रिय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के साथ बिजनेस करने वाले इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप ने बुधवार को कई इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एक क्लास एक्शन का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंटेंट क्रिएटर्स ने कोलैप्स्ड एक्सचेंज को बढ़ावा देने के दौरान अपने व्यूअर्स और फॉलोअर्स पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को पुश किया। मुकदमा $1 बिलियन से ज्यादा के डैमेजेस की मांग करता है और बिटबॉय, क्रिप्टो क्रिएटर बेन आर्मस्ट्रॉन्ग और फाइनेंस यूट्यूब क्रिएटर ग्राम स्टीफन सहित 7 अन्य व्यक्तियों और टैलेंट मैनेजमेंट फर्म क्रिएटर्स एजेंसी सहित लाखों ऑनलाइन तक पहुंचने वाले कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ लाया गया था।
Moving on, Marathon Digital Holdings said that revenue for the fourth quarter of the year declined 58% from the same period a year earlier to $28.4 million. The Bitcoin miner had been expected to report revenue of around $38.4 million for the quarter. The company last month cancelled an earnings call and postponed the release of the result to correct accounting errors that related to the impairment of digital assets. In the newly released report, full-year revenue for 2022 declined 26% to $117.8 million from a restated $159.2 million in 2021. The company recorded a net loss of $686.7 million for the year compared to a loss of $37.1 million in 2021. Bitcoin production was up 42% in the fourth quarter to a record 1,562. On an annual basis, production increased 30% to 4,144. That's all for now. And now let's move on to our next segment, the weekly wrap. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. Bitcoin reclaims $26,000 amid Perky risk appetite. Cryptocurrencies moved in a wider range this week as fears of bank run from the US to Europe pushed investors to safe assets. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market value, swung between $22,500 to $26,000 level. Similar moves were witnessed by Ether, the second largest cryptocurrency. The markets have stabilized now to a certain extent with global central banks from the Federal Reserve in the US and Swiss National Bank coming to the bank rescue. Bitcoin has reclaimed psychologically important level of $26,000 while Ether has its eyes set on $1,750. And now let's cut across to Manoj Thara to get an insight on the global cryptocurrency market. Absolutely. SVB Financial Group has actually filed for the Chapter 11 bankruptcy protection and at the similar time, Bitcoin has actually crossed $27,000 mark. Bitcoin soared to over $27,000 as the news came out, and markets also reacted to the Federal Reserve's decision to pump in liquidity into the US economy, which is actually seen struggling by the analysts. The bank's issues became known last week when it announced the sale of billions of dollars worth of its portfolio, realizing a loss of $1.8 billion, as we have extensively covered this issue on 3.0 TV. As its stock tumbled, the FDIC had to intervene and halt trading. Since then, a few more US banks have come under the spotlight with similar issues. And while reports emerge that several watchdogs have launched a probe into the SVB, this is actually a time when we are seeing the US economy taking a backseat because of this issue. The struggling banking system has actually benefited the entire cryptocurrency market, and Bitcoin we have seen soaring past $27,000 mark, which is actually the first time since June 2022. So crypto markets have given a big thumbs up, and many analysts are actually talking about it on social media, wherein it's saying that Bitcoin is now the hedge against inflation. That's a long shot, although, but only time will tell. But here you can see which cryptocurrency companies had some sort of exposure to SVB as well as the Signature Bank, and which is another struggling bank organization, are feeling the pressure, and cryptocurrency markets will keep an eye on all the movements which is actually there in the US markets, and the fate will be decided in the upcoming week. Thank you. Thank you, Manoj. Moving on. On Saturday, India's crypto industry pulled off a near coup by bringing lawmakers and members of India's ruling party to a conference discussing Web3. Indian exchange coin DCX, backed by the industry's policy body Bharat Web3 and in media outlet Forbes, brought lawmakers to an event titled Namaste Web3 at one of Delhi's 5-star luxury hotels to discuss India's G20 presidency and potential opportunities for India in the Web3 sector. The conference managed to bring senior leaders from India's ruling party, National Vice President Baijayant Panda and former Law Minister Ravi Shankar Prasad to an event. From the opposition benches, it brought a chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Commerce and a deputy leader of the Parliament's lower house.
While lawmakers and government officials have privately had wide-ranging consultations with the industry, this was a rare occasion where they've publicly shown up, lending the space a fresh legitimacy. Web3 is important with a caution, come out of the shadow of crypto, said Prasad, who has also been a former information technology minister. तो विशाखा एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है, क्योंकि हम देख तो रहे हैं, हालांकि बजट में कुछ नहीं कहा गया क्रिप्टो करेंसीज को लेकर या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर, लेकिन अभी जैसे G20 की प्रेसिडेंसी के पहले भी एक बैंगलोर में मीटिंग हुई थी, तब भी कुछ खास वहाँ से निकल कर नहीं आया था, लेकिन अब पता चल रहा है कि भारत Web3 और जो कि ऑलरेडी इट्स बैक्ड बाय CoinDC और फोर्ब्स जो है उन्हें पूरा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया था, और दिल्ली के एक लग्जरी होटल में लॉ मेकर्स थे, मेंबर्स थे फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, और लोगों ने जो G20 प्रेसिडेंसी को लेकर ही और थोड़ा सा Web3 को लेकर जो है बातचीत की है, और आई थिंक बहुत से आगे डिसीजंस बनाए जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा, मैं कहूँगी इसको पॉजिटिवली हम देख रहे हैं कि हम चाहते ही हैं कि कुछ Web3 को लेकर या क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कुछ अच्छे रेगुलेशंस लाए जाएँ, कुछ रूल्स लेकर आए जाएँ, कुछ ऐसे हों, एक मापदंड हो जिस पर सब लोग चलें ग्लोबली, तो उनके ऊपर थोड़ी बातचीत अब हो रही है खुलकर, और इस तरह के इवेंट की बात भी हो रही है। जी, तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि बातचीत अब खुलकर हो रही है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि बैजयंत पांडा जी और जो रविशंकर है, दोनों ही लीडर्स ने ये चीज़ भी कही है, हालांकि कि जो Web3 है, क्रिप्टो इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन एक कॉशन के साथ, तो यानी कि वो एक इम्पॉर्टेंस तो दे ही रहे हैं Web3 को, विच इज़ एक्चुअली अ गुड मूव अहेड ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। Moving on, India's Enforcement Directorate is investigating several crypto cases for money laundering schemes and has seized $115.5 million to date in such crimes, the Ministry of Finance said. The latest in a series of crackdown by the authorities on the nascent space that is already reeling from the tumultuous market conditions. The Indian Crime Fighting Agency has also arrested 5 individuals in crimes abetted by cryptocurrency and in the past sent a show cause notice to local exchange WazirX and its directors for crypto transactions exceeding $338 million, the ministry said. The disclosure comes at a time when India is pushing ahead with rules to better scrutinize the activities of cryptocurrency firms, even as until now, New Delhi has resisted formulating a blanket law to regulate the virtual digital assets. Last week, the Ministry of Finance said that crypto will be governed by anti-money laundering rules in the South Asian market. Under the new change, crypto exchanges, NFT providers, and custody wallet operators will be responsible for monitoring suspicious financial activities. तो यहाँ पे जितनी भी सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, पहले भी निर्मला सीतारमन ने पहले भी ये कहा है कि जो क्रिप्टो है वो काफ़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और ये ट्रैफिकिंग में यूज़ होता है, और अब यहाँ पे एक रिपोर्ट जो सामने आया है, ये जो आंकड़े सामने आए हैं, वो 115.5 मिलियन डॉलर्स जो है वो इतना बड़ा अमाउंट सीज कर लिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, और साथ ही 5 इंडिविजुअल्स को भी अरेस्ट किया गया। तो बेसिकली जो ईडी का शिकंजा जो था वो क्रिप्टो की तरफ ज़्यादा तब बढ़ा जब ये चाइनीज़ लोन ऐप का पूरा मामला सामने आया, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए जो है देखे गए कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू जो है कंट्री से बाहर जा रहे हैं। उसी के चलते WazirX पर भी जो है उन्होंने उस पर रेड की थी ईडी ने। तो अभी आई थिंक उसी की तरफ चल रही है पूरी जांच, ताकि क्रिप्टो देखो कहीं ना कहीं क्रिप्टो से जो एक ऑपोजिशन आ रही है, जो रेजिस्ट कर रही है आरबीआई या फिर पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो इसीलिए क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के में थोड़ा इसका इन्वॉल्वमेंट दिखता है। तो जितना ज़्यादा ईडी इस पे अपने खुद को थोड़ा सा इस चीज़ पे अपना शिकंजा रखेगा, उतना ही ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम होंगी। जी, दैट्स ऑल्सो गुड। और अभी हो सकता है कि काफ़ी आगे काफ़ी कुछ सामने भी आए और एक्सचेंजेस पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। मूविंग ऑन, according to an announcement made on Wednesday, India and the United Arab Emirates will collaborate on central bank digital currencies by conducting joint pilot. In Abu Dhabi, the Reserve Bank of India and the Central Bank of the UAE signed a memorandum of understanding. The central banks will investigate interoperability between the two countries' CBDCs. The banks will also conduct joint proof of concept and pilot of bilateral CBDC bridge to facilitate cross-border CBDC remittance and trade, according to the statement.
तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव मूव है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर एक्चुअली में इंडिया और यूनाइटेड UAE के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स CBDC को लेकर होती है, तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू डू सो, बिकॉज अभी फिलहाल US UK ये भी इन सब में पीछे हैं। हालांकि वो काम कर रहे हैं CBDC की तरफ, लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी CBDC लॉन्च कर दी है ना। और यहाँ पर चाहे वो रिटेल की बात करें, होलसेल की बात करें, उसमें CBDC ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, चल रही है, और अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की बात हो रही है। तो वेरी वेरी पॉजिटिव एंड गुड। बिल्कुल, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की बात हुई, और उसके बाद जो क्रॉस बॉर्डर CBDC रेमिटेंस जो है, तो ये बहुत अच्छा मूव है और बहुत ही प्रोग्रेसिव मूव है। Moving on, Meta, the parent company of Instagram and Facebook, is winding down its integration of non-fungible tokens on its platform. Stephen Casriel, Meta's head of Commerce and Financial Services, wrote in a Twitter thread on Monday that the shutdown will allow the company to focus on other ways to support creators, people, and businesses. Casriel specified that Meta won't give up on its mission to help creators connect with their fans and will pivot focus on other products such as Reels for messaging and monetization. Meta will also continue to work with NFT and Web3 content creators who leverage its suite of tools to help them grow their community. तो यहाँ इस हफ्ते एक बड़ा अपडेट आया, जहाँ मेटा ने अपना जो NFT की तरफ जो एक सपोर्ट था वो बंद कर दिया, क्योंकि वो मेटा पे पे फोकस करना चाहते हैं। और जो अभी सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ था, लगभग 10 महीने शायद हुए थे इन्हें, इनका जो NFT है वो अलग अलग कंट्रीज में इन्होंने 100 देशों में, पहले लास्ट ईयर मई में उन्होंने लॉन्च किया ये NFT फीचर। उसके बाद अगस्त में 100 कंट्रीज में NFT मिंटिंग एंड ट्रेडिंग शुरू कर दी, विच वाज वेरी पॉजिटिव। और हमें यही लग रहा था कि मेटा इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा टेक जायंट है, तो आई थिंक NFTs को बूस्ट मिलेगा इससे। लेकिन इट वाज एक्चुअली शॉकिंग कि वजीर एक्स ने पहले अपनी NFT मार्केट प्लेस बंद कर दी, और अब मेटा ने अपना ये NFT टूल जो है वो बंद कर दिया। और जहाँ तक दिख रहा है, जो मेटा का रुझान है वो थोड़ा सा रील्स को मोनेटाइज करना और अपने बाकी क्रिएटर्स के लिए उनके वर्क को मोनेटाइज करना, मेटा पे की तरफ ध्यान जो है उनका ज़्यादा है। और साथ में ये तुम जानते ही कि जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है मेटावर्स, जो रियलिटी लैब्स है, उन पर उनका पूरा फोकस है। जी, लेकिन आपने बताया कि उस पर फोकस है, लेकिन अब उससे भी वो AI की तरफ जो एक शिफ्ट ले रहे हैं। और उसके बाद एक और बड़ा अपडेट यहाँ पे आया, जब 10,000 का फिर से ले ऑफ हुआ मेटा के थ्रू, क्योंकि नवंबर में भी 11,000 यानी कि 13% वर्कफोर्स को निकाला गया था, और अब फिर से 10,000 लोगों को मेटा ने निकाला है, क्योंकि वो कहता है कि ये ईयर ऑफ एफिशिएंसी है। तो इसमें जो इनके लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनसे ये थोड़ा ध्यान हटाकर जो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उस पर फोकस करना चाहता है। So moving on, decentralized lending protocol Euler Finance will offer a $1 million reward for information about the attackers behind its nearly $200 million exploit that occurred Monday. In on-chain messages sent from Euler's deployer contracts, deployers said, following up on our message from yesterday, if 90% of the funds are not returned within 24 hours, tomorrow we will launch a $1 million reward for information that leads to your arrest and the return of all funds. The lending protocol suffered an exploit on Monday that resulted in almost $200 million being lost over 4 transactions in DAI, wrapped Bitcoin, staked Ether, and USDC. The attacker used a flash loan to conduct the attack by temporarily tricking the protocol into falsely assuming it held varying amounts of E-token and D-token. Euler's native EUL token continued sliding from the second day, falling 16% in the past 24 hours, CoinGecko data shows. According to on-chain data compiled by security firm BlockSec, the Euler Finance attacker attempted to launder stolen funds by transferring 1,100 ETH worth $1.8 million to cryptocurrency mixer Tornado Cash. तो यहाँ पे Euler Finance पे जो है $200 million का एक एक्सप्लॉइट हुआ। तो उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि अगर 90%, पहले उन्होंने ऐसे कोशिश की कि हैकर अगर अपने आप से 90% जो है रिटर्न कर दे, जो हुआ नहीं। फिर उन्होंने $1 million का रिवॉर्ड भी रखा कि अगर ऐसा आप 90% नहीं रिटर्न करते तो हम किसी ना किसी को रिवॉर्ड देंगे जो आपका अरेस्ट करा पाए और रिटर्न करा पाए रिफंड। लेकिन अभी फिलहाल लगता है कि हैकर किसी भी माइंड में नहीं है रिटर्न करने के लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी $1.8 million के जो ये टोकन्स थे उनको ऑलरेडी टोर्नेडो कैश में कन्वर्ट कर दिया। एंड वी नो दैट एक बार जो पैसा गया टोर्नेडो कैश में, फिर उसको कोई भी रिकवर नहीं कर सकता, ट्रैक नहीं कर सकता है। और ये जो $200 million की जो ट्रांजैक्शंस हुई वो 4 जैसे कि डाई में हुई, और रैप बिटकॉइन, स्टेक्ड ईथर और USDC में हुई। Moving on, Circle, the stablecoin issuer, announced on March 10th that $3.3 billion in cash deposits remained at Silicon Valley Bank, the lender that had been shut down
earlier in the day by regulators due to a run on deposits. This amount accounts for approximately 8% of total reserves backing Circle's stablecoin USDC. Circle held a portion of the reserve assets backing its $40 billion USDC stablecoin with Silicon Valley Bank, one of 6 banking partners. USDC is the market's second largest stablecoin and a critical component of the crypto ecosystem. Concerned investors redeemed over $1 billion of USD tokens over, causing USDC to temporarily lose its dollar peg on some exchanges and pushing the largest stablecoin swap pool on the decentralized finance platform Curve into heavy imbalance. तो सर्कल के यहाँ पे जो कुछ एसेट्स हैं यानी कि $3.3 बिलियन के वो सिलिकॉन वैली बैंक में फंस गए। तो सिलिकॉन वैली बैंक का पता ही है हमें कि काफ़ी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, ने उसको तो शट डाउन कर जी दिया। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे इसमें उनको उनके बीच में एक कंसर्न आया और उन्होंने कम से कम $1 बिलियन के जो अपने USDC थे वो निकाल लिए। और ऑब्वियसली जब उन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि ये जो USDC उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं 1 बिलियन वर्थ के, तो उससे एक तो USDC जो है वो डीपेक हो गया था बीच में, और दूसरा उस फंड्स को जो है बिटकॉइन में लगाया जा रहा है थ्रू इन्वेस्टर्स। इसीलिए बिटकॉइन की जो वैल्यू फिलहाल वो काफ़ी ऊपर है, $26,000 से ऊपर है बिटकॉइन। तो आई थिंक ऐसा कई बार होता है कि जो मार्केट में बड़ी हलचल होती है उससे मार्केट सेंटिमेंट सेट होता है, और हम देखते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा जो कैश है वो मार्केट से निकाल लिया जाता है या पंप इन कर दिया जाता है। दैट्स हाउ वी सी द एंटायर अप एंड डाउन द मूवमेंट इन द प्राइसेस। So moving on, HSBC Holdings said that its UK ring-fenced subsidiary HSBC UK Bank is acquiring Silicon Valley Bank UK for £1 as per a filing. As of March 10th, SVB UK had loans of around $6.6 billion and deposit of around $8.1 billion, the filing read. The sale announced Monday was facilitated by the UK government under the resolution powers designed to wind up failing lenders without destabilizing the financial system. Late Friday night, the Bank of England tweeted that SVB UK would be put into insolvency, but that the lender had a limited presence in the country. US regulators on Sunday said that SVB depositors would be made whole and be able to access funds as of Monday as they seek to stop the biggest bank failure since 2008 from undermining confidence in the financial system. तो यहाँ पर जो SVB बैंक है उसको एक तरह से बचाने के लिए, SVB बैंक की जो UK सब्सिडरी है उसको बचाने के लिए HSBC ने उसे अक्वायर कर लिया, और वो भी सिर्फ £1 में। और ये मैं कहूँगी एक तरह से HSBC के लिए अच्छा था, क्योंकि अगर हम देखें तो SVB बैंक के जो लोन थे वो $6.6 मिलियन थे और जो उसका डिपॉजिट था वो 8.1 बिलियन था। बट क्योंकि रेगुलेटर्स ने ऑलरेडी शट डाउन कर दिया SVB को, तो SVB तो ऑपरेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो डिफरेंस भी एक्चुअली मैटर नहीं करता कि ऐसा नहीं हो पाता कि वो अपने लोन्स पे ऑफ कर दे फिर भी अपना आगे ऑपरेशंस जारी रखता। तो एनीवेज HSBC ने उसको अक्वायर कर लिया, और जो गवर्नमेंट है UK गवर्नमेंट भी है वो इसे सपोर्ट कर रही है और फैसिलिटेट कर रही है कि इट्स अ गुड मूव कि कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी में कोई बैंक या कोई कंपनी बंद ना हो और कहीं ना कहीं उससे सपोर्ट करके ऑपरेशन जो है चलते रहें। जी, तो बहुत फ़ायदा यहाँ पे HSBC को हुआ है, देखा जा सके तो। बिल्कुल। Moving on, Play Today, a Web3 golf company, has added 2 of the world's largest golf equipment brands, Callaway and Adidas Golf, to its world-first golf metaverse, which will debut with the NSW Open Golf Championship. During the NSW Open, which will be held at Rich River Golf Club in Muama, NSW from March 16 to 19, both companies will launch innovative new interactive brand experiences in the metaverse. Augmented reality will allow players to virtually view the most cutting-edge physical golf products from the comfort of their homes. The event is predicted to bring in over 20,000 viewers a day or 80,000 over the course of the 4-day tournament, all of whom will be able to virtually experience in 3D the 2 largest golf brands in the world, plus so much more. तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं दे आर एम्ब्रेसिंग मेटावर्स, और अब यहाँ गोल्फ भी मेटावर्स में आ गया है। तो ये जो चैम्पियनशिप होने वाली है मार्च 16 से 19 के बीच में, तो ये 4 दिन के इवेंट में ये कहा जा रहा है कि इस पार्टनरशिप के थ्रू कम से कम 20,000 नहीं तो पूरे 4 दिन के बाद तो कम से कम 80,000 जो व्यूअर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पूरा देख सकते हैं, सारी इक्विपमेंट्स को वो 3D वर्ल्ड में देख सकते हैं। और वैसे भी हमने स्पोर्ट्स के लिए लोगों की दीवानगी देखी है, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है वो अलग ही होती है, इसलिए फ़ैन टोकन्स
इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इतने ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं, तो आई थिंक मेटावर्स पे भी जब ये एंटर कर रहे हैं तो इसे भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। बिल्कुल। So moving on, Matrix Partners led a $7 million seed funding round for Web3 art platform Wild. Gwyneth Paltrow, Reid Hoffman, and Kevin Lin, co-founder of Twitch, also participated in the round, which closed late last year, according to Wild founder and CEO J. Douglas Cobbs in a written interview with the blog. The startup refused to reveal its valuation. The startup will use the funding to further build out its residency and invest in infrastructure to power its experiential art. Many of Wild's collections can be accessed through in-browser experiences without needing to connect a wallet. तो यहाँ पर gwyneth paltrow इतनी बड़ी हॉलीवुड स्टार हैं, अब उन्होंने भी Web3 में एंट्री कर ली है एंड इस प्रोजेक्ट को, वाइल्ड प्रोजेक्ट को उन्होंने भी थोड़ा बैक किया है. शी हैज़ ऑल्सो गिवन हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फंडिंग. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड एक्सपीरियंशियल आर्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सपीरियंशियल NFTs या एक्सपीरियंशियल आर्ट जो होता है जहाँ पे आप कुछ एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं. यू नेवर नो, इसमें एक फ़ैन टोकन का एंगल भी ऐड कर दिया जाए और कल को जो फैंस हैं वो gwyneth paltrow से मिल पाएँ. बिल्कुल. तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो Web3 स्पेस में एंटर कर रहे हैं और क्योंकि इट इज़ स्टिल Web3 इज़ ड्राइविंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू द इकोनॉमी, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाए और Web3 को और ज़्यादा बूस्ट मिले. That's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2 TV and have a great day.